So, hello everyone, this is Deepak Joshi, and today we are going to solve a GFG problem, that is fractional knapsack. It is a problem from greedy, okay, it is a part of a greedy question. Okay, now I want all of you to go through this particular problem statement. It states that we have given weights and values of n items, and we have also given a knapsack of capacity W. Now, what we need to do is we need to maximize total values of knapsack, and it is allowed to break the items. What do I mean by this? I'll explain it to you later. Okay. Now, just have a look at this particular example. It states that we have basically हमें struct दिया है, not arrays. So we will हमें यहाँ पे इस object item object का array दिया हुआ है. Okay. तो हम इसे मेंटेन कर लेंगे, नो इश्यूज विद दैट, वो तो हम हैंडल करना आता ही हमें. ओके, नहीं आता है तो सीख लेंगे. तो हमें वैल्यूज एंड वेट्स दिए हैं. व्हाट वी नीड टू डू इज हमें 50 kgs मैक्सिमम उठाना है, एंड हमें यहाँ पे 240 kgs 240 रुपीज मिले, वैल्यूज उसकी मिली. कैसे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक बार, है ना? इंट्यूशन डेवलप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर सेकंड टाइम, दैट्स व्हाई आई जस्ट पेस्टेड द सेम थिंग. वैल्यूज यहाँ पर हमें ये दी हैं एंड वेट्स हमें यहाँ पर ये दिए हैं. ओके, if I want to calculate the actual price of per kg of the thing, then how I'm going to do is value divided by weight. Let us assume कि I go to market and I found out that 50 kg floor sack is of 1300 rupees. Then how I'm going to calculate the 1 kg of floor cost, how much? So it will be 1300 divided by 50. So similarly, I'll be dividing value with the weight to get the particular things per kg price. So it will be 60 divided by 10, that is 6. 100 divided by 20, that is 5, if I'm not wrong, और मेरे table काफी strong है तो ठीक है. And 120 divided by 3 is 4. All set. Now, as these things are arranged in decreasing order, no issues with that. हमें कोई जरूरत नहीं है. But if it is not, then we have to arrange this thing in the decreasing manner also. Okay, it will be more clear to you when I will code. Okay, now uh, just let us take value. Okay, solution solve value है ना. This will be initially 0 है ना, and we have given w equals to 50 because हम knapsack में 50 kgs of weight ही रख सकते हैं, उन्होंने हमें मेंशन किया है. ओके, नाउ हमने इस सॉल्व वैल्यू को 0 मान लिया इनिशियलाइज करने के लिए, और हम एक सॉल्व प्राइस भी मानकर चल रहे हैं, दैट इज सॉल्व solve value and solve weight मान लो. ठीक है, this is our value which we need to return and this is our weight. Initially हमारे पास कोई weight नहीं है, 0. अभी क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो 66 ये वाला पहले आएगा. हम क्या करेंगे, इसका 10 kgs ले लेंगे. हमने 10 kg ले लिया तो इट विल बी 10. ठीक है, एंड उसका प्राइस हमें कितना पड़ता है, दैट इज 60 रुपीज. देन अब रिमेनिंग कितना है, एक बार मैं यहाँ पे आपको रिमेनिंग भी दिखा देता हूँ कि हमारे टारगेट रीच करने के लिए, टू रीच द टारगेट हाउ मच वेट इज रिमेनिंग वेट इज 40. ठीक है, नाउ 50 था, 10 हम ले चुके हैं एंड इट कॉस्ट अस 60 रुपीज एंड द रिमेनिंग वेट इज 40. नाउ फॉर द नेक्स्ट थिंग द वेट इज 20. ओके, so I'll be adding it to my solve value and the remaining weight will decrease by 20. I'm sorry, I need to write 20 here, and the price of the particular thing will be 60 plus 100. Okay, no issues with that. Now, अब issue ये है, actually my remaining weight is 20 but my weight that is needed to be that is there is 30 kgs. तो बहुत इश्यू हो गया कि भैया मैं तो 20 किलो लेने आया था आपसे, लेकिन आप तो मुझे 30 किलो का बोरा दे रहे हो, है ना. यू आर गिविंग मी द सैक ऑफ 30 kgs बट आई ओनली नीड 20 kgs ऑफ फ्लोर. तो वो कहेगा ओके भाई कोई बात नहीं, खुला खुला ले लो, खोल के ले लो. तो हम कहेंगे ओके, बट हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग? सिंपल, as simple as that. 120 divided by divided by 30 per kg, and this particular thing, let me this particular thing multiply by my remaining weight. That's it. That is how I'm going to calculate my solve weight. And let me tell you, it is 4. Okay, and 4 into 20 is, if I'm not wrong, then it is 80. And if I add all these things, 60 plus 80 is 140, 140 and 240. So it will be 240. I hope my answer will be 240. Yes, it is 240. So this is all we need to write to get this particular thing done, to get this particular piece of code run. Okay, now let us take this particular example also. Okay, then it will make our view much more clear.
ओके, नाउ टारगेट अगेन फॉर 50 वैल्यूज हमें ये दी हैं एंड दिस थिंग्स आर गिवन टू अस नाउ. First, calculate the price. 60 divided by 10, that is 6. 100 divided by 20 is 5. Already sorted in decreasing order, no issues with that. Initially, solve value will be 0 and remaining will be maximum, that is 50. And अभी हमने कुछ नहीं खरीदा है. Okay. Now, in decreasing order 6, so I'll be going and buying the 10 kgs of the thing, that is 10, and it will be then my remaining will become 40, and my solve weight will be my solve weight will be the मैं यहाँ पे वेट ऐड कर रहा हूँ. बताओ, मैंने लास्ट एग्जांपल में वैल्यू में वेट लिखा है. आप समझ गए होंगे कि ये एक्चुअली में यहाँ होना चाहिए था और ये सॉल्व वेट होना चाहिए था. ठीक है, बट कोई नहीं, फील समझ में आता है हमें. नाउ, if I talk about solve value, the value of this particular 10 kg of thing is 60. ठीक है, and now I'll move to 20. The weight is 20, then it will add up to 10, that will make it to 30, and my remaining weight will become 20 itself, and the weight of it is 100, so it will be 60 plus 100. Now we do not have any remaining remaining items to add to my cart, so I'll be doing checkout. Okay, and it will cost me 160. Still, I don't achieve my target, that is 50 kgs of weight, but because I have remaining 20 kgs of weight still, but I don't but the given problem statement do not have further item to reach this particular target, so my answer will be 116. Let's check. Yes, it is 116. Now, how we are going to do this particular thing? As it is जैसा सोचा है ऐसा ही कोड करूंगा. ठीक है, as it is I am going to do this particular thing. No issues with the time complexity. ठीक है, first initially we need to sort the particular thing. How we are going to I hope it is visible to you. If it is not, then I'm going to zoom. Okay, now initially we need to sort this particular item array. So how we are going to solve this particular thing? In now we need the inbuilt sorting algorithm gives us the sorted array in the increasing order, but I want that the sorted array comes out to be in decreasing order. For that, I'm going to write a comparator function that will be that will be written in my private part of the class, and let us make it static bool, and the name of the comparator function is itself cmp, and it will take two items that will be of item and a and item b. Okay, now, on which basis we have sorted the particular thing? On the basis of the price per kg. Remember, I have calculated the price per kg. दोनों example में it is already sorted in decreasing order, but we have to sort this particular thing in decreasing order itself. So let us calculate the price per kg. ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ इतना बड़ा वेरिएबल का नाम, बट टू एक्सप्लेन इट टू यू आई एम राइटिंग प्राइस पर केजी फॉर वन. ठीक है, केजी फॉर वन मीन्स फॉर आइटम ए it will be let us do not make it in double int. Let us make it in double क्योंकि it can be in double, है ना, decimals में भी आ सकता है per kg price. And double of a dot, what's the value of the particular thing, divided by double a dot, what's the weight of the particular thing. यही तो हम करते हैं. 1300 for the sack of the floor, and the weight of the sack is 50 kgs. 1300 divided by 50. I have done the same thing, value divided by weight, and same thing I'm going to repeat for the double price per kg for 2. That is double, it's this time b dot value divided by double b dot weight. And as I need to return in the decreasing manner, decreasing fashion, what I'll be doing is price per kg of one should be greater than my price. I'm sorry, price per kg of 2. That's it. Okay. So this will sort my array in the decreasing fashion. Okay. Now, what do I need to do is, from now onwards, from by doing this particular thing, हमारा स्टेप क्या था मैं भूल चुका हूँ, तो आइए स्टार्टिंग से बनाते हैं.
ठीक है, क्योंकि इंट्यूशन याद होनी चाहिए हमें। जो दिया था हमने उसे सॉर्ट किया था, हमने प्राइसेस निकाले थे, देन उसके बाद हम क्या करने वाले थे, हम ट्रेस करने वाले थे और कंपेयर करने वाले थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट अस, यहाँ के लिख रहा हूँ मैं, तो लेट अस क्रिएट टू वेरिएबल्स फॉर नाउ। ठीक है, मैंने कोई कोड याद नहीं किया है, मैं भी आप ही के साथ इंट्यूशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो आपको भी बस ऐसे ही सोचना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जो करेंटली हमारे वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, करंट वेट नाम से, आई एम सॉरी, करंट, जो इनिशियली जीरो होगा। ठीक है, एंड वेट कैन बी इन इंट, एंड एक चीज हम वैल्यू बनाएंगे जो हमारा टोटल इंट, एंड इट विल बी नॉट इन इंट, इट विल बी इन डबल, बिकॉज वी हैव टू रिटर्न द आंसर इन डबल। फंक्शन रिटर्न्स इन डबल, राइट? ओके, नाउ एज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी, हम आंसर रख सकते हैं बट मैं आंसर नहीं रखूंगा, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, एंड इट विल बी इक्वल टू शून्य डॉट शून्य शून्य, शून्य डॉट शून्य, शून्य डॉट एक, इट विल बी कमिंग, ओके, तो डबल फाइनल वैल्यू शून्य डॉट शून्य। नाउ शून्य डॉट एक मीन्स बाइनरी फॉर्म, शून्य एंड वन इज द बाइनरी फॉर्म, दैट्स व्हाई आई सेड। ये हमने कर लिया है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू आइटरेट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, till n, from I equals to 0 to I is less than n. Now, here I'll be checking that if my current weight, WEIGHT, plus my ARR of I का weight, that is ARR of I dot weight is less than equal to weight, अगर ऐसा is less than equal to my target weight, अगर ऐसा होता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। देखो 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 देखो, अब ध्यान समझना, ये तो सॉर्टेड था, है ना? प्राइस मैं जल्दी से लिख देता हूँ, दैट इज 6 and 5, है ना? ये तो सॉर्टेड था। अब हमने क्या किया था, हम सिंपली यही तो कर रहे थे कि अगर देखो बाबू, ये जो 10 है, ये हमारा 10 और हमारा करंट वेट, अभी मान लो हमारा जो करंट वेट हमने वेरिएबल लिया है, ठीक है, दैट इज 0, और रिमेनिंग अभी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं बताऊंगा उसे अगले केस में। एंड हमारा जो मैं फाइनल आंसर ले रहा हूँ, दैट इज फाइनल वैल्यू, वो भी अभी हमने 0 लिया है। नाउ जो करंट वेट प्लस जो मेरा वेट है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 50 है, तो हम इस वैल्यू को पूरा ही ले सकते हैं ना। तब हमें कोई इस प्राइस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना? मतलब आपको आपको 10 किलो का बोरा मिल रहा है, ठीक है, 10 किलो का बोरा मिल रहा है, एंड आपको 50 किलो चाहिए, तो आप 10 किलो का बोरा तो पूरा ले सकते हैं। उसमें आपको उसे अनरैप करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो हम यहाँ पे सिंपली वही करेंगे कि अगर हमारा करंट वेट, जो कि करंट वेट अभी इनिशियली तो 0 होगा, एंड ARR ऑफ आई डॉट वेट, दैट इज दिस थिंग 10, अगर लेस देन इक्वल टू वेट होता है, तो सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू से कि भाई साहब, इस वेट को, WEIGHT, इस वेट को क्या कर लो, ले लो। ठीक है, डॉट वेट ले लिया। अगर ये हम ले लेंगे तो हमें उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे, दैट विल बी फाइनल वैल्यू प्लस इक्वल्स टू ARR of I dot my value. Okay, else if this is not the case, then I have to check what's my remaining thing. Okay, remaining is my 50, and this thing else case क्या होगा, देखो else case समझाता हूँ। इस केस में हमें else case देखने को नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे ये वाला केस लेते हैं। ठीक है, लेट अस गो टू दिस केस। जब हमने सब यहाँ पे कर लिया था, देखो वेट 10 था इनिशियली, तो मैं 10 उठा लेता हूँ यहाँ पे वेट, और उसके पैसे मैंने दिए 60 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा हमारा 40। ओके, देन उसके बाद 20 था। ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में, इसलिए मैं सॉर्टेड चेक नहीं कर रहा हूँ। 20 था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 20 था, तो मैं यहाँ पे इस वेट को 30 कर दूंगा, एंड द रिमेनिंग विल बी 20, एंड द कॉस्ट विल बी 20 प्लस 100, सॉरी 60 प्लस 100, दैट इज 160। ओके, नाउ अब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब क्या होगा, माई करेंट वेट इज 30, एंड द ARR ऑफ आई डॉट वेट इज 30, दैट इज 30 प्लस 30 बिकम 60, विच इज ग्रेटर देन W, which is greater than my target 50. This is my else case. In this particular thing, I have to take care of my remaining, because मुझे मात्र 20 किलो चाहिए. So, first of all, let us calculate the remaining. That is, it will be in integer, na? It will not be in double. So, int remaining equals to my target weight minus my current weight.
Okay. So I have calculated this, my target weight that is 50, my current weight that is 30 becomes 20. Okay. I have calculated this particular thing. Now, for the value thing, final value, how I'm going to do this thing? Okay, simple. देखो, यहाँ पे उससे 20 किलो ले लेंगे अगर हम 20 kgs, तो हम 50 हो जाएंगे एंड रिमेनिंग वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना, यही होगा। लेकिन उसके लिए अच्छा चलो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो रिमेनिंग वैल्यू जीरो हो गई। कॉस्ट कैसे आएगी उसकी? दैट इज कि 120 मैंने बताया था आपको पहले भी, 120 डिवाइडेड बाय आर 30 मल्टीप्लाई बाय माय रिमेनिंग दैट इज 20। ओके, बाय सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग आई विल बी गेटिंग माय फाइनल वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ भी लगाएंगे फाइनल वैल्यू का, ठीक है। हाउ हाउ फाइनल वैल्यू plus equals to, now look at this particular thing very carefully, double, okay, ARR of I dot value, okay, 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 divided by double ARR of I dot weight, okay, and on division of this particular thing I'll be getting the price per kg multiply by my remaining, that is REMAINI जी। वैसे स्पेलिंग गलत है, ये NING होना चाहिए ना मेरे हिसाब से। ओके, आई होप दिस शुड वर्क। एंड जब ये हमारा हो जाए तो ब्रेक दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज वी हैव रीच्ड आवर टारगेट वेट, तो नो इशू, नो further need to carry on my for loop. So I'll be returning my what final value. Let us check कि हमने कितने सारे एरर किए हैं। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने हंस रही है दुनिया, तो काम कर रहा, एंड इट सेज करेंट वेट, ओके नो इश्यूज, काम कर रहा हूँ मेरी सारी खामियों पे, एंड आई थिंक सबमिट हो जाना चाहिए। Yes, it has been submitted successfully. I hope all of you have enjoyed this particular problem statement and आपको सीखने को भी मिला है। If you have any doubt, please feel free to ask me. फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।